Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's session, we are going to start chapter number 7. Okay, and the name of this chapter is Our Food. This chapter is based on food. Okay, the food items which we intake. Okay, in this chapter, we are going to see what is the meaning of food grain. About pulses, we are going to learn how many types of pulses, and about the spices. Okay, the areas where spices are grown. Okay, we are also going to see cereals, fruits and vegetables. Okay, and the areas where all those food items grown. So all this thing we are going to see in this chapter. So come with me and let's start the chapter. India is a vast country. The climate is different in different parts of our country. You all know, my dear student, India is a very vast country. Okay, so the climate of each state is different from another state. Okay, there are found various types of soils in different region. Okay, just like the weather and just like the weather conditions are different in different states. Similarly, there are also found there are also find there are also available different types of soils in different parts of our country. The rainfall in different areas is not the same. So throughout our country there is no equal amount of rainfall. Some areas receive more rainfall while some areas receive less rainfalls. Okay, some areas in our country receive plenty of rainfalls, means a large amount of rainfall, just like Assam. Okay, Assam, a northeastern state of India, it receives maximum amount of rainfall, while on the other hand the area like Ladakh and Rajasthan, okay, the area like Ladakh and Rajasthan, they hardly receive rainfall. Okay, places in Jammu and Kashmir, okay, so the union territory of Jammu and Kashmir, it remains cold, means it experiences winter season almost throughout the year. Okay, while on the other hand side the southern state of Tamil Nadu, okay, Tamil Nadu state remains warm in the whole year. Okay, so Tamil Nadu, which is a South Indian state, it remains warm throughout the year. Okay, in Goa, okay, Goa is another state of our India. Goa winters are pleasant while Shimla winters are very cold. Okay, see, Goa and Shimla is the capital of Himachal Pradesh. Okay, so Goa and Shimla both experiences cold season, winter season. But you know what, the winter season which prevails in Goa, they are very pleasant. Okay, they are not very much cold. Okay, but on the other hand side, Shimla city experiences severe winter season. Okay, the variation in climates also causes variation in the vegetation of people or different region of our country. तो अभी आपने देखा कि असम में कुछ और है, तो लद्दाख और राजस्थान में कुछ और है. ठीक है, कश्मीर में अलग है, तो तमिलनाडु में अलग है. ठीक है, तो सिमिलरली गोज विथ गोवा एंड शिमला. तो जब इतने सारे क्लाइमेटिक वेदर डिफरेंशिएशन हम लोग देख सकते हैं एक सिंगल कंट्री में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने लोग जितने पार्ट्स में रहते हैं उनका खान पान भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा. क्यों? क्योंकि वो उनका खाना पीना रिलेट करता है वहां के क्लाइमेट के फैक्टर्स के ऊपर. ठीक है, पीपल ईट अ वेराइटी ऑफ फूड. हमारे इंडिया में हर तरीके का क्लाइमेट अवेलेबल है. दैट्स व्हाई वी पीपल ऑफ इंडिया ईट वेराइटी ऑफ फूड. The food habit of the people are based on the kinds of crops grown in that region. और जो हमारी food habits होती हैं, ठीक है, जो food habits होती है हमारी, वो डिपेंड करती हैं उस जगह पे क्लाइमेट कैसा है. ठीक है, तो जैसा क्लाइमेट होगा वैसी क्रॉप्स उगेंगी और जैसा क्रॉप उगेगा वही हम खाएंगे. ठीक है, the crops grown in an area depend upon the climate of that place, the kind of soil it has, the availability of वाटर. तो क्लाइमेट के साथ साथ उस एरिया का सॉइल कैसा है, वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है. ठीक है, तो इन सब पे बेस्ड होता है हमारा खाना पीना. ओके, सो द फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज food grains in different regions. Okay, so we grow different kind of food grains in different parts of our country. Okay, food grains are one of the most essential and vital component of human survival. Okay, we all human beings need food for our own survival. Okay, beside the most commonly consumed food grains,
such as rice and wheat, which are commonly the world over. There are other food grains such as, see, the most consumed food grain item is your rice and wheat. Okay, rice and wheat are consumed not only on nationwide, although it consumed throughout the world. Okay, so apart from rice and wheat, we also consume different type of cereals like your pulses, millets. Okay, we consume. Okay, so apart from rice and wheat, we also consume cereals, pulses and millets. Okay, and they all fulfill all the nutritional requirement by a human body. Okay, so here you can see, my dear student, different types of food grains are shown here. This is a picture of a wheat. Wheat का मतलब क्या है? जिससे हमें आटा मिलता है. ठीक है. This is a picture of a rice cultivation. This is ज्वार, बाजरा, corn and millets. ठीक है. चलो, अब हम पल्सेस के बारे में देखेंगे. पल्सेस क्या होती हैं? लेट्स हैव अ लुक. पल्सेस आर द सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, द लेग्यूम फैमिली. ठीक है, पल्सेस क्या होती है? देखो, पल्सेस क्या है? वो बीज होती है लेग्यूम फैमिली की. लेग्यूम फैमिली का मतलब है दाल की फैमिली. ठीक है, तो ये दाल के पौधों के ये बीज होते हैं. ठीक है, दीज आर द सीड्स. प्लांट्स दैट नॉट प्रोड्यूस सीड्स और ग्रेन्स दैट ग्रो विद इन सच एज लेंटिल्स, बीन्स, पीज एंड चिकपीज. देखो, बहुत से प्लांट्स ना कोई सीड या ग्रेन पैदा नहीं करते हैं. ठीक है, बहुत से प्लांट्स क्या करते हैं? उनमें कोई बीज नहीं रहता है. तो वो प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूसेस लेंटिल्स, बीन्स, पीज एंड chickpeas. Okay, so here you can see, my dear student, these are the pictures of different types of pulses. Okay, so the first is your gram, the second is your urad dal, arhar, masoor and beans. Okay, so these are the commonly used pulses in our household. Okay, now after pulses we are going to see cereals. Cereals क्या होते हैं? See, cereals and millets are warm weather crop used both as a food and fodder. सीरियल्स और मिलेट्स क्या होते हैं? सीरियल्स और मिलेट जो होते हैं ना, ये गर्मी के क्रॉप्स होते हैं. ठीक है, और ये हमारे खाने के साथ साथ ये जानवरों को भी खिलाने के लिए काम आते हैं. मतलब ये फॉडर के भी तौर पे काम आते हैं. जैसे बहुत से सीड प्लांट्स होते हैं, हमने सीड तो ले लिया, बाकी जो उसका प्लांट बचा है वो हम क्या करेंगे? वो हम जानवरों को खिला देंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट मिलेट्स आर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं? लेट्स हैव अ लुक. The important millets are jowar, bajra and ragi. Okay, these are the important millets. Here you can see the examples of millets: ghee, mustard oil, coconut oil, groundnut oil. Okay, देख रहे हो? चलो, now we are going to discuss about spices. Spices जिसके बिना हमारा खाना ही अधूरा है. ठीक है, देखो, various spices are used to make the food tasty and delicious in India. My dear students, why we add spices in our food? Okay, we add spices in our food to make our food tasty and delicious. Okay, if our food items are tasty and delicious, then we are going to eat the food. Okay, because without taste and without deliciousness, we are not going to eat our food. Okay, Indian food is famous in the whole world due to its spicy food. You all know, my dear student, our Indian food. Okay, our Indian food items are worldwide famous. And why our Indian food items are worldwide famous? Due to its spicy taste. Okay, so the spices, so the most common spices which is used in every household of India, these are our turmeric, black pepper, cardamom, chili, cloves. Okay, these are the common spices which we use on a daily basis in our household. Okay, ये क्या करते हैं? ये हमारे खाने में टेस्ट ऐड करते हैं. ठीक है, सो हेयर यू कैन सी दिस आर द पिक्चर ऑफ कॉमनली यूज्ड स्पाइसेस इन आवर एवरीडे हाउसहोल्ड. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ टर्मरिक. टर्मरिक का मतलब हल्दी. ठीक है, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च. ओके, कार्डेमम इलायची, चिली, रेड चिली एंड ग्रीन चिलीज. फिर क्लोव्स, क्लोव्स का मतलब लौंग. ठीक है, तो ये सारे वो क्या है? कॉमन स्पाइसेस जो हमारे घर में यूज होते हैं डेली बेसिस पे. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, see, but before starting fruit and vegetable, let's have a look on some interesting fact. See, Kerala is a South Indian state which is known as the spice garden of India. Okay, because Kerala produces the largest amount of spices in our country. That's why state of Kerala is known as the spice garden of India. Okay, now let's move here about fruits and vegetables. See,
Fruits and vegetables are grown in almost every area and are eaten in all the states. See, fruits and vegetables are grown in each and every state of India. Okay, but all kinds of vegetable and fruits are not got throughout the year. पर क्या होता है कि सारे फल या सारे वेजिटेबल्स हमें पूरे साल नहीं मिलते हैं, कुछ सीजनल होते हैं तो कुछ पूरे टाइम भी मिलते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर सीजनल. वेजिटेबल्स तो हमें तब भी मिल जाएंगे, लेकिन फ्रूट्स क्या होता है, फ्रूट सीजनल होते हैं. ठीक है, डिफरेंट फ्रूट्स आर ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. तो हमारे इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उतने टाइप के हमारे पास फ्रूट्स हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. Jammu and Kashmir, the Union Territory of Jammu and Kashmir is famous for its apple production. Okay, apart from apple production, Jammu and Kashmir is also famous for its cherries and strawberries. Okay, so my dear students, if anyone asks you why Jammu and Kashmir is famous, Jammu and Kashmir is famous for the production of apple, cherries and strawberries. Okay, and saffron are also cultivated here. Okay, now Maharashtra. Maharashtra is famous for its mangoes and oranges. The Western India state Maharashtra is famous for the production of mangoes and oranges. ठीक है? Nagpur produces plenty of oranges. Okay, so Nagpur, a city in Maharashtra, it is famous for production of its oranges. संतरा कितना अच्छा लगता है, विंटर का सीजनल फ्रूट है. ठीक है, वो कौन है, महाराष्ट्र प्रोड्यूस करता है. और महाराष्ट्र में नागपुर एक सिटी है जो कि फेमस है पूरे इंडिया में अपने ऑरेंज कल्टीवेशन के लिए. ठीक है, मैंगो एंड गुआवास, आम और अमरूद. ओके, मैंगो एंड गुआवास आर प्रोड्यूस्ड प्लांट इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, उत्तर प्रदेश क्यों फेमस है, उत्तर प्रदेश अपने आम के लिए और अपने अमरूद के प्रोडक्शन के लिए फेमस है. लद्दाख इज फेमस फॉर द ग्रोइंग एप्रिकॉट्स. ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी किस लिए फेमस है, एप्रिकॉट्स के प्रोडक्शन के लिए. पपाया एंड बनानास आर ग्रोन इन गुजरात. ठीक है, गुजरात फेमस है पपीता और केलों के प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स एप्पल. जस्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स. Melons are found all over India in summer season. Watermelon, muskmelon, ये क्या है, ये water content fruits हैं जो कि all over India में इनका production होता है. Coconuts are grown mostly in the coastal region. जो हमारा coastal region है, coastal region का मतलब जो हमारा साउथ वाला इंडिया है, साउथ का जो ये यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है. ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे इंडियन ओशन है. ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन है. ठीक है, तो जो ये कोस्टल वाला हमारा एरिया है ना, ये फेमस है हमारे कोकोनट के प्रोडक्शंस के लिए. ठीक है, कोस्टल इंडिया इज फेमस फॉर इट्स कोकोनट प्रोडक्शन. ओके, नाउ Kerala and Tamil Nadu. See, in coastal area, it means in South India, Kerala and Tamil Nadu are famous for its coconut production. So, largest producer of coconut in India is Kerala and Tamil Nadu. Pineapples, okay, pineapples, ananas, okay, pineapples are grown in Assam, Goa and Kerala. Okay, pineapples are mainly produced in the states of Assam, Goa and Kerala. Okay, my dear student. So here you can see the pictures of yummy fruits: apple, orange, pineapple, coconut and cherries. Okay, these are so delicious fruits. Now we are going to see about vegetables. Okay, see, vegetables are also grown in the different parts of our country. अभी हमने fruits का production देखा, तो उसी तरीके से vegetables भी हमारे states में produce किए जाते हैं. There are various types of vegetables used in our country. हमारे इंडिया में बहुत टाइप के vegetables का प्रोडक्शन होता है और हम उन्हें खाते हैं. Some vegetables are seasonal. बहुत से vegetables seasonal होते हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी एक सीजन के होते हैं. जैसे आपका कैरेट, गाजर. ठीक है, carrot, cauliflower, peas, spinach leaves and mustard leaves are vegetables which are available in the winter season. ठीक है, गाजर है आपका, फूल गोभी है, मटर है, पालक है, ये सब क्या है, ये सारे आपके सीजनल फ्रूट हैं. पर कौन से सीजन के, ठंडियों में ये सब मिलते हैं. बट नाउ अ डेज माय डियर स्टूडेंट, यू कैन फाइंड कैरेट, cauliflower, peas throughout the year, but they are not tasty in nature. Okay, so the vegetables of carrot, cauliflower or peas which is available in winter season, they are more tasty. Okay, while bitter gourd and lady finger are the vegetables which are got during summer season. ठीक है, करेला,
ठीक है, और लेडी फिंगर मतलब भिंडी, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे गर्मियों के वेजिटेबल्स है। ओके, सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कैरेट, कॉलीफ्लावर, पीज एंड लेडी फिंगर। In our India is also famous, apart from fruits and vegetables, our India is famous for its sweets and snacks. Okay, so the sweets and snacks of our India is once again once again worldwide popular. Okay, so let's have a look. Various types of sweets and snacks are also eaten in India. In the southern states, see, in South India, okay, in South India, people mainly consume idli, okay, dosa, sambar, uttappam, and payasam. Okay, so the most famous dishes which is made in South Indian states are idli, dosa, sambar, uttappam, and payasam. Payasam is a sweet dish. Okay, now बर्फी, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा एंड पेठा, they are the most famous sweet dishes of North Indian states. South India is famous for payasam. Okay, North India is famous for its barfi, gulab jamun, various types of halwa like gajar and moong dal ka halwa and petha. Okay, now West Bengal. Okay, West Bengal, our West Bengal state is world famous for its rosogullas, cham cham, and sandesh. Okay, so these are the world famous sweets available in our West Bengal state. In western part of India, means our western part of India is world famous for its amras and shrikhand. Okay, now meat, egg, and fish are important food items for many people. Okay, so some people are non-vegetarian. Okay, they eat non-veg like meat, they eat meat, fish, and eggs. Okay, they are known as non-vegetarians. So the people who used to eat meat, fish, and egg, they are collectively called as non-vegetarians. Okay, and so the people who used to eat vegetables, they are called as vegetarian. Okay, people who do not eat meat, egg, or fish and eat food grains, vegetables, are called vegetarian. Okay, so my dear students, this is all in this chapter. Okay, but before wrapping up this chapter, we have to remember some points. Okay, let's have a look. Food grains are one of the most essential component of human survival. Okay, in North India, people usually eat, means the North Indian people usually used to eat wheat, jawar, and bajra. Okay, wheat, jawar, and bajra. In the South India, people mainly eat rice because idli and dosa, okay, idli, dosa, uttappam, they all are made from rice. Okay, in the eastern part of India, people like to eat rice and fish. Okay, people who do not eat meat, egg, and fish and eat food grains, vegetables, and fruits are called vegetarians. Okay, so this is all in this chapter, my dear student. I hope you all got a very good understanding of this chapter. Okay, now go thoroughly through this chapter and complete all the exercise based on this chapter. Now I am taking leave and going to meet with you all in my next video with a new topic. Till then, take very good care of yourself. Bye.